दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते. Thank you, Ms. Archana, for this. Now, I hold this opportunity in my highest esteem to introduce you all today's respected guest teacher, Dr. Amna Mirza. At present, she is working as an assistant professor at Shyama Prasad Mukherjee College. She is an alumni of Delhi Public School, Mathura Road. She did her graduation from St. Stephen's College and master's from Hindu College and MPhil and PhD from the University of Delhi itself. She is a recipient of Godfrey Phillips Golden Ovary Award, St. Stephen's College Sanitary Medal for Character Combined with Learning, Bharat Nirman Award for Women in Entrepreneurship, Mook Nayak National Award, Business Rankers Women Achievement Award, and many more. She has been associated with art and culture festivals and regularly contributes columns to several newspapers and magazines. She has also pursued additional coursework from HarvardX, United Business Institutes, Belgium. Her research areas include foreign affairs, international political economy, globalization, internal relations as well. She has 7 books of her credit which were well received by academia, media, and other alike. She has 30 research papers in peer-reviewed journals and has participated in more than 100 conferences at the national and international level for paper presentation as a resource person invited lectures. She also has patent awarded from the Government of Australia and India, supervised PhD candidates and pursuing research projects as well. Now, I would like to invite her to the stage to share her valuable insight for all of us. Ma'am, I do request you to please grace us with your valuable words and give us permission to start the event. Please, ma'am. Thank you. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you Anand ji for that very kind words of introduction. And as I address the wonderful fraternity of the History Society at Shyam Lal College Evening, University of Delhi, I'll try to be bilingual. मैं दोनों भाषा में बात करूंगी क्योंकि मैं दो भाषाओं में लिखती हूँ, तो मैं हमेशा प्रयास भी करती हूँ कि जब भी हम बात करें तो दोनों भाषाओं का मंथन अवश्य हो. सबसे पहले समस्त IQAC की टीम at Shyam Lal College Evening, respected Dr. Manish sir, Dr. Ela ma'am, Ajay ji जो कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत ही प्यारे हमारे students, all the wonderful students that we have, Archana, Aradhya, Sahil, Divya, all the students that I see right now, Anant ji, and at the outset, congratulations to you all for this very splendid initiative. Now that we are there at the 7th edition, क्योंकि सातवें पारे तक आने का भी जो एक छात्र के द्वारा ये जो प्रयास है, ये बहुत ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि कोई भी प्रयास जो होता है वो केवल एक दिन में नहीं होता, वो काफी दिनों की मेहनत होती है. जब शुरुआत में आनंद जी पूरी रूपरेखा बांध रहे थे, मैं उसको बहुत ही गौर से सुन रही थी. आई वाज लिसनिंग टू ऑल द वेरी interesting points put forward by the JCC Society and with this very wonderful initiative of the journal, that how the Constitution, it is a beautiful document that tries to get together the past, present and the future. Now, why this is very essential to constantly re-understand, because ये जो मंथन है हमारे भविष्य का, हमारे वर्तमान का और हमारे इतिहास का,
ये केवल एक समय का मंथन नहीं है. It requires a constant engagement. It requires a constant dialogue. Now, Anand ji pointed out that we're living in a time of controversy. थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक टिप्पणी जरूर रखूंगी क्योंकि मैं कला के क्षेत्र से हूँ. पढ़ाने के साथ साथ पूरा प्रयास करती हूँ कि देश में विभिन्न लिटरेचर फेस्टिवल में, आर्ट फेस्टिवल में अपना योगदान रखूं. So I would say Anand ji and the entire team that we are living at a time of not controversies but contested times, because we are living in a time where we have so much information, and उस information का अनुवाद कैसे होता है, that is the real essence thing. So again, living at a time where we have so much information, living at a time wherein we are seeing how technology is completely redefining our lives. So in this aspect, the very idea of reimagining constitution, the very idea of reinterpreting the debates, the ideas, the themes, the concepts that were there, I think it becomes very significant. So in this light, I would really first of all congratulate Dr. Manish, the editor of the journal, and the entire team of JCC कि इतना बेहतरीन आपने सार्थक प्रयास करा है. Because at the student level, it is very essential to constantly engage with it. मैं आप लोग, because I always believe that we as teachers, we are always students. हम teachers तो हैं लेकिन हम जिंदगी भर students हैं. पढ़ना, सीखना, लिखना, कलम, किताब के साथ ये जो हमारा कारवां है वो निरंतर रूप से रहेगा. We always have to attempt to learn, relearn and unlearn. I would just like to add in here that when I was at St. Stephen's College, हमारे principal साहब हमें बताते थे that education in true sense takes place beyond the curriculum. पाठ्य और पाठ्यक्रम से हटकर जो आप पढ़ते हैं वो सच में जीवन की शिक्षा होती है. So today when JCC, the society at the Shyam Lal College Evening has come up with a journal, this is a reflection of true education, because this presents ideas that were there in the young minds with reference to contemporary issues, with reference to issues of the present day realities. It becomes essential to reflect on that. It becomes essential to keep on engaging with it. And I think it's very much I think Dr. Manish, Dr. Ela, the entire team of the history department deserves huge congratulations, because faculty को alongside their other academic responsibilities to engage with these endeavors, it is definitely praiseworthy. अंत में अपनी मैं बात जरूर ये रखूंगी that जैसे हमने माना है कि जीवन में सीखना एक निरंतर प्रयास है, और आप सब लोग बहुत ही सुंदर रूप से संविधान जैसे दस्तावेज को उससे जुड़े हुए, जैसे मैं देख रही थी आपके इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डायनामिक्स, बिकॉज टुडे द पब्लिक डिस्कोर्स इज अ वेरी डायनामिक डिस्कोर्स. आज जिस खबर के साथ यदि हम उठ रहे हैं, शायद कल वो खबर ब्रेकिंग न्यूज ना रहे. So living at a time where dynamism defines our life, living at a time where communication revolution has a huge impact on our life, it becomes very significant once again to keep on engaging, to keep the dialogue on, and of course to keep the process of learning forward. अंत में ये जरूर कहूंगी कि आप इस जर्नल को केवल कॉलेज तक सीमित ना रखें. आई वाज लुकिंग एट ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क दैट यू ऑल हैव डन. पूरा प्रयास करें, because today as I believe that students of today are entrepreneurs, students of today are innovative drivers, and above all the students of today, they lie in the realm of multidisciplinarity. आज इतिहास का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को कई सारे इनपुट्स देता है. Student of history can present important inputs to students of economics. So in that way, take your attempts towards the new heights. Use all platforms of media, new media, to spread the word, to keep the good work going. इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और क्योंकि मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी और सारी बातें, आप सब लोग खूब अच्छा काम करिए, खूब तरक्की करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें भी हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए अपने सार्थक प्रयासों के साथ. Keep doing all the wonderful work. All my best wishes. Once again, gratitude, Dr. Manish, Archana ji, Dr. Ela, पूरी जो टीम है हमारी JCC की, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for your kind words. Ma'am, your words set a beautiful platform for your further proceedings. So here the main event starts.
I do invite all the editors of the magazine to tell us more about the magazine, the JCC, the Journal of Continuity and Change, and to launch the seventh edition of the Journal of Continuity and Change, which is the Art of the Constitution. Thank you so much, Mr. Anand. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives. This is a quote by Subhash Chandra Bose. And such is the idea of the Journal of Continuity and Change. A very warm good afternoon to everyone. I am Divya Tyagi, editor of the magazine, and this is indeed a proud feeling and moment for all of us to launch the seventh edition of the magazine, Journal of Continuity and Change, JCC, by graduates, which, as told, is an initiative by Sakshya. So we created this platform to give the young graduates a chance to write and get their works published and to get recognized. And as we publish the articles, poems, stories, book reviews, and research papers of the graduate scholars and provide them with e-certificates for the same, which will help them in the future as well. Now, it helps them to improve their writing skills, their rational thinking, their creativity, and confidence. Now, for our magazine, we come up with new and innovative themes every month, as told by Mr. Anand. And the theme for the month of January is the art of constitution. Our constitution has completed 73 years. Constitutional morality is not a national sentiment, it has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it. The strength of the constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. To safeguard democracy, the people must have a keen sense of independence, self respect, and their oneness, and should insist upon choosing as their representatives only such persons as are good and true. Constitutional democracy, you see, is no romantic notion. So it's our defense against ourselves, the one foe who might defeat us. Every article and schedule of the Constitution is a burning issue in itself, and this theme is dedicated to all those issues that we have overseen. The Constitution not only talks about sovereignty, socialism, secularism, democracy, justice, liberty, equality, and fraternity, but also the latent concerns of the country. So, this edition is an attempt to understand how the young scholars interpret and analyze the Indian Constitution and create their own idea of India. So, to celebrate the 73rd Republic Day, the Journal of Continuity and Change by Graduate 7th edition is set on the theme Art of Constitution. And now the editors will give a better insight of all such issues in the main event of the day. That is the editor's insights by discussing and answering the questions about each of their articles. Now the further proceedings will be taken up by the rest of the editors and they will explain more about the magazine. Thank you, Ms. Divya. Good afternoon, everyone. I am Priyanka Verma, one of the editors of this magazine. So, the page you are seeing right now is our feedback page where readers, be it a student or a teacher, submit their valuable opinions about our magazine. And you guys can also submit your feedback on our magazine through the bottom right corner of the page. That you can see there's a button over there. And we hope that you do submit your opinions. And moving on, we have our from the editors or from our editorial board page, from where you can get a brief information about the theme. Also, it will tell you about what the editors of the authors are trying to portray from the respective articles. And moving on, we have our content page where you can see our whole magazine's content. Also, here you can see which editor wrote about which article and the brief summary about the articles, along with the informed page numbers where you can find them. Further, moving on to the first article we have from Ms. Deepa Tiwari titled Parivartit Ain or Striyan, where she has talked about the changing nature of the constitution and emphasized on adding such a provision that can improve the status of women in our society. The next article is from Ms. Divya Tyagi with the topic What It Means to Be an Indian, where she talked about the meaning and the reality of the act which aims to help and protect the persecuted religious minorities in our neighboring countries. Moving on to the next article, we have from Miss Archana Bharti titled Seen but Unseen, Heard but Unheard. In her article, she has talked about modern slavery and she has tried to awaken the reader's eyes towards the most gruesome forms that humanity can take. The next is my article, The Litigation of Justice, where I have talked about the chief objective behind PIL, public interest litigation,
and how it ensures justice to all and promote the welfare of the people. So now we also take articles and poems from students apart from our editors. And here the first poem is by Mr. Dev Chaudhary titled as मैं संविधान बोल रहा हूँ. The second article is from Miss Astha Singh on the topic The Rule of Guns That Continues to Haunt India, where she has talked about how the acts of violence has been proved draconian as because of violence many innocent people has been killed. The next one is from Miss Vaishnavi Mishra, titled as Unexpected or Pre-Planned Emergencies, where she talked about the different types of emergencies of our constitution. The next article is from Mr. Vishesh Kashmi, titled as कूटनीति के नए आयाम यूरेशिया, जिसमें उन्होंने मध्य एशियाई देशों का महत्व अथवा उनके बीच में अच्छे कूटनीतिक संबंध होने पर लिखा है. Then we have got articles from these budding scholars, Miss Siddhi Tiwari, Miss Riya, and from Miss Divya Yadav. Now, also Journal of Continuity and Change by Graduates has a special section from the ongoing talk series GSTS, which features articles. The first article is by Miss Mandira Paul, titled as Journey of Calcutta, in which she has talked about its history and its culture, its food practices, etc. You should really go through this one, is very interesting. The next one is Reverse Migration by Miss Neetu Kumari, in which she has talked about all those migrants who got unemployed because of the COVID pandemic. It is a harsh reality. So the another one is from Mr. Sahil Sharma, titled as Psychology of Finance, in which he talked about how money plays a crucial role in altering human emotions and our morals. For further proceedings, I call Ms. Archana Bhati. Over to you, Archana. Thank you, Ms. Priyanka. Good afternoon, everyone. This is Archana Bharati, one of the editors of JCC. The next section that we have is the Reconnaissance Section. In this, we publish research papers of the graduates provided the research is authentic. In this edition, we have published a research co-written by Ms. Kajal and Mr. Shahid. Then we have the next section, it is a cultural critic section where we provide you with various recommendations on books and movies, and in this we have also incorporated a very interesting page जिसको हम बोलते हैं आर्ट स्ट्रोक. एंड इन दिस एडिशन हमारे पास पेंटिंग्स है विंसेंट वैन गॉफ की, एंड देन देयर इज अ पेंटिंग बाय जोआन ग्रिस. उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है जीनियस सेक्शन, जहाँ पे हम एक क्विज पब्लिश करते हैं, एंड देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पेज राइट ओवर हियर दैट इज वेज टू स्टार्ट द ईयर ऑफ राइट, जिसमें हमने कुछ सजेशंस दिए हैं हाउ यू कैन मेक दिस न्यू ईयर दैट इज 2022 अ मच बेटर ईयर देन द लास्ट वन. Then we have the references page where you can get the references and citations of all the articles that have been mentioned before this. In the end, we have the next issues theme. That is, the next issue is science splash. We live in a society exclusively dependent on science and technology. And the thing is, we hardly know anything about science and technology. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Science exists everywhere around us, and just like any other educational disciplines like history and political science and literature, science consumes our entire being. Even reading this magazine is possible because we have science. So you see कि science सिर्फ लैब और कोड और सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि science is everywhere. Science is the knowledge of consequences and dependence of one fact upon another. साइंस इज क्वेश्चनिंग, एंड दिस क्वेश्चनिंग का जो आंसर है, जितनी भी मिस्ट्रीज है पूरे यूनिवर्स में, उसका आंसर हम सिर्फ साइंस से ले सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इसीलिए दैट इज व्हाई द नेक्स्ट थीम दैट इज साइंस स्प्लैश इज सेट ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे इन द मंथ ऑफ February, and in which we want to like question all the mysteries of the universe through various themes and subtopics, but of course you are not restricted to the subtopics. You can choose any topic that you like, provided that it is aligned with the theme. And the subtopics are science and environment, science and religion, science and pseudoscience, science in the universe, pharmaceutical science, bioethics, science in our culture like yoga, ayurveda, etc.,
excavation and exploration through science, that is archaeology, anthropology, etc. Then there's cognitive science, science and health or food, and then science and technology. You can find all the rules and guidelines to submit your works through this page, that is the rules and instructions page. And do send us your article by the 18th of February. I would repeat it, 18th of February on jcc.slc@gmail.com. And we accept articles in both the languages, like both Hindi and English language, and research को भी हम हिंदी और इंग्लिश में accept करते हैं. So we expect कि आप अपने research और अपने articles हमें by the end 18th of February आप submit करोगे. Then in this page there is a read our previous issues page where we have added a QR code, and by scanning this QR code you can like read all the previous issues that we have published. At the last, I would like to thank all other team members of JCC who worked round the clock to successfully launch this magazine. And I would also like to thank Sakshya for the immense support in the completion of this magazine. Thank you all. Now I would like to hand over the stage to Ms. Divya. Thank you so much, Ms. Archana. So this was a magazine. I hope you all like our magazine by the looks of it, and I hope that you all will read it and understand what we and young graduates have tried to analyze and interpret, and it will give you a very good insight about the current issues related to the Constitution. Thank you so much. Thank you, Ms. Divya. The magazine was beautiful. Let's start the second and very interesting event of today's program, that is Editors Inside 4. It will be an exclusive talk with editors and the chief editor of the magazine, and for that, I would like to call Dr. Manish Karamwar and our editors. The stage is all yours. Okay, thank you, Anand. It's my time. Yes, sir. Anand? Yes, sir. It's Yeah. your turn. So, yeah, it's my time. Thank you for giving me time. Usually, I'm not speaking much, but this is a stage where I'm going to in conversation and contact with my editors, because uh, मेरा ये मानना है कि लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों आना चाहिए. Now then you become a good scholar, a teacher, and a student who gives nation so many things. Only writing, only speaking, or only reading. This is not going to only appreciate by anyone. So we need a strong youth, and through this youth, this forum is all about writing and reading, and another forum, GSTS, is all about speaking. So if you inculcate or combine all those ideas, then you become a perfect students. Okay, thank you on this occasion. Thank you, my students. Firstly, I welcome Dr. Amna Mirza. With the short notice, she accepted our invitation, and really your insight is very useful for my students, and especially my female students. So thank you, Dr. Amna, for coming, and all of my colleagues, my friends from my college, especially I'm looking Dr. Ila Hossain Jan, and other my fellow colleagues are definitely here. So thank you, my students, colleagues, and some of my MA students also. So let's get started with some conversation, because I'm a firm believer that this is a very crucial stage to write about, or a stage, or trying to write about the Indian Constitution or the art of the Constitution. So well-crafted magazine, and thank you very much, the four outstanding editors, and my first editor, Mr. Anand Joshi, who has started this whole journey with me, and this journey is going forward with Miss Archana, Miss Divya, Miss Deepa, and Miss Priyanka, and two other guys, Mr. Sahil and Aradhya Tyagi.
and all other teams of Sakshya History Department and Graduate Scholar Talk Series. So let's get started, okay? So give me 2 minutes because I'm a teacher and I'm very fond about the Constitution. I'm learning and teaching Constitution. So some initial remarks and then I'll involve myself in conversation with my editor. So with 395 articles and 12 schedules, I think right now 448 articles or 450 articles, schedules the Constitution of India, probably the longest in the world, coming into effect in January 26, 1950. And the very interesting things, 12 volumes and 11 bulky volumes. When they compiled all those materials, 11 bulky volumes, and those volumes exceeded more than 1,000 pages. So this is my initial remark to all our constitution lovers. At least go and study these more than 12,000 pages. And right now, you'll find in archives and some of the material in the Supreme Court library also. So go and find out, because those debates are popping up in newspapers and media. They're 1% of what Constitution be it. So this is very fascinating, our Constitution, okay? And in this process, Constituent Assembly had more than 300 members, and Grenville Austin identified 20 are being the most influential, and of these, as many as 12 had law degree, and including the Congress stalwarts, respected Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. And the most important thing in moving the resolution, Nehru invokes the spirit of Gandhi and the great past of India, as well as the modern proceedings such as French, American, and Russian Revolution, because everybody knows that Jawaharlal Nehru was a strong ideologue of socialism and left idea also. So he invokes these things because new and old, in combination of the new and old. But the same time, we had a strong opposition there, and the two most of the strongest opposition, one of by Mr. Mahabir Tyagi, and he was very disappointed to see nothing Gandhian in the Constitution. In the same stage where Nehru, Vallabhbhai Patel, and other stalwart leaders are looking forward for the Constitution, we had the Mahabir Tyagi and another K. Hanumanthaya, that he invokes what? The music of Veena and the sitar. What they had got instead was the music of English band. So उनको क्या मिला वहाँ पे? सितार और वीणा नहीं, बल्कि क्या मिला? म्यूजिक बैंड, इंग्लैंड का म्यूजिक बैंड मिला. So a strong deliberation, a strong counter by these two, and many. And the last, before in conversation with our editors, without 3 lines of Dr. Ambedkar, we are not going to understand Constitution and understand differences of opinion. And the 3 are, and everybody should understand this. The first is the first concern of Mr. Ambedkar, that no place of popular protest in democracy. There was no place for bloody revolution, of course, but his view somehow he contradicted with the Gandhian view. That time where Gandhi was not around, but he was able to speak not against the Gandhi, but some of ideas of Gandhi. That means there is no idea of protest. And the second was warning concerned the unthinking submission of the charismatic authority, or सीधे directly towards the Nehru. So what I'm trying to say, the fascinating debate, discussion on the Constitution about all these things, and somehow we are missing in so many debate forums like this. Strong, and Ambedkar was the part of first cabinet. So that was the beautiful initiation of our Constitution. And the third one, that
we are not going to only satisfied with the political democracy. We need some social engineering. The three ideas, Ambedkar gives us a strong idea of notion of our nation, and still he was the part of the first Congress like cabinet. So hats off to all these good leaders, be from any party and be it from any ideologue like left, right, center. Everybody's contribution in this constitution. So right now, this is my firm idea. Constitution is for the people, by the people. जो बोला जाता है वही है कॉन्स्टिट्यूशन. आज इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखें. तो दिस इज द आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर, सो I think this topic is very near to my heart, so I took long. So next 15 minutes I will in conversation with my editors, and I'll start first with every editor having 30 minutes time to give me answer. I pose one question. मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और हर एक एडिटर के पास 30 मिनट का 30 सेकंड का टाइम है. वो आपका अपना आइडिया, नॉट कंस्ट्रक्टेड, बिकॉज यू पीपल आर strong enough to form your own idea. My question is, was Constitution successfully in fulfilling the hopes and aspiration of people? Go ahead, like Ambedkar, like Nehru, like Sama Prasad Mukherjee. What do you want? Go ahead. So start with political science honors student Deepa Tiwari. 30 seconds. Sir, can you repeat the question in Hindi? Yes. क्या क्या संविधान ने हमारी आकांक्षाओं को पूरा किया है? सर, इसका मैं दो तरीके से अगर आंसर देना चाहती हूँ. पहला है नेगेटिव पर्सपेक्टिव से और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से. अगर हम देखें तो हाँ, कहीं ना कहीं उसने हमारी नीड्स को फुलफिल किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है. जैसे कि मैंने अपने मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा है वो करके लिखा है कि बता रहा था कि कैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. Only 30 seconds. So one positive thing about constitution. Positive things. Yes, sir. They definitely fulfill our needs and. Yes. So over to you, Divya. ओके सर. सो डेफिनेटली सर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से क्रिएट किया था ताकि हमारी सारी नीड्स जो है, हमारे सारे राइट्स हैं, वो फुलफिल करे जाएं. लेकिन वी आर इन सच अ टाइम जहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ मॉडर्न आ रहा है. तो अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, द आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करें या फिर सिटीजन्स की बात करें, तो उन लोगों का इंटरप्रेट करने का या फिर समझने का तरीका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस टाइम पर इतना अच्छा नहीं है. तो Okay, over to you. Over to you, Priyanka. यस सर. सर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है. हम सेंट्रल डेमोक्रेसी पे हैं, लेकिन हम स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छे हैं. एंड सर, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ने फुलफिल किया है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस सर. Over to you, Miss Archana. सर, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ने फुलफिल किया, बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट पीपल आर. सो हम अपने राइट्स को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक. दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द मैगजीन आल्सो, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट इट हैज बिकम जस्ट अ मेरे लॉयर्स डॉक्यूमेंट. अगर मैं अभी बोलूँ तो वी डोंट इवन नो व्हाट आवर राइट्स आर. सो अगर रियलिटी में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं उतना आ रहा है जितना उसे होना चाहिए था. Good. So I'll start with in conversation with the concerned articles. So Archana, आप इसे start करते हैं because you have produced a wonderful piece of paper and research. And one more thing I want to reiterate here, that our article also passed by Urkun and plagiarism. Less than 10%. This article has only 7% plagiarism. So this is the new concept we have started from the last edition, because everybody is talking about the plagiarism and similarities. So only 7% plagiarism in this article. So hats off for my young and dynamic editors. Thank you. So Archana,
Mm, wonderful article you have written. So, something, what do you mean by domestic slavery? आप एक कैचिंग वर्ड मुझे मिला आपके आर्टिकल में, वो है डोमेस्टिक स्लेवरी के बारे में. सो डू यू गिव मी मोर आइडिया अबाउट व्हाट यू योर मीनिंग अबाउट, आई डोंट मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक स्लेवरी? सर बेसिकली स्लेवरी इज समथिंग जिसमें हम एक्सप्लॉइटेशन करें, एंड डोमेस्टिक स्लेवरी पे आते हैं देन जैसे मैंने अपने आर्टिकल में रेफरेट किया है दैट बहुत टाइम फ्रॉम विलेजेस चिल्ड्रन आर लाइक दे आर टेकन फ्रॉम देयर एंड दे आर सेंट टू द सिटीज टू वर्क इन द हाउसेस. तो डोमेस्टिक वर्क जहां पर भी हो रहा है और उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है कि उनके उनके वर्क के लिए पेमेंट नहीं दी जा रही है और उनको मतलब लाइक वायलेंस हो रहा है, उनके साथ अब्यूज हो रहा है, देन इट कम्स एज टू डोमेस्टिक स्लेवरी. एंड Ashna, so how we resolve this? Suppose that every time we are having a maid, we are having a servant. Most of Indian middle class, we are going to having the maids and servants. So as a simple solution, I'm not talking about the solution of through constitution, through Indian Penal Code and through police. So what your one solution about how we curb all those domestic slavery? कैसे हम उस domestic slavery को कम कर सकते हैं? सर इसका भी मैंने आंसर आर्टिकल में ही दिया है लाइक कि एजुकेशन एंड थ्रू लाइक कि हम डिपेंड ना हो, लाइक स्पेशली फॉर विमेन वी नीड टू नॉट डिपेंड ऑन द मेल्स, लाइक नॉट ऑन हस्बैंड्स एंड नाइदर ऑन द मेल रिलेटिव्स. क्योंकि अगर जैसे कि कब होता है डोमेस्टिक स्लेवरी कि जब मेल हस्बैंड्स या फिर रिलेटिव्स अगर उनकी डेथ हो जाती है देन द विमेन आर फोर्स्ड टू लाइक एक्सेप्ट ऑल द अब्यूज एंड दे हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क. तो हम उन पे डिपेंड ना हो बल्कि लाइक खुद से वो अपलिफ्टमेंट अपना खुद करे, एंड एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज पावर. So that is So like something concern to this. So uh, where we stand, because you are talking about the feminism. So some people are talking about the divorce and the right, live-in relation is the right, and etc. etc. So where you find our what kind of feminism we need right now in India, because suddenly we gear up with the fourth and fifth gear to live in relation, to equal to divorce right, to this, to that. So where we stand as a feminism in India? Sir, हम I कहाँ think, stand कर रहे हैं? sir, I think we are still in the first gear and we need to like gear up for the first gear only. Like जैसे मैंने आर्टिकल में बताया कि वॉक फ्री फाउंडेशन का एक रिपोर्ट आया था एंड उसमें 18 मिलियन पीपल आर इन स्लेवरी राइट नाउ. लाइक पूरे इंडिया में मैं बात करूँ, वर्ल्ड का तो आप छोड़ दीजिए, 18 मिलियन पीपल इन इंडिया. So that is a huge number and we are not able to like उनको हम फ्रीडम नहीं दिला पा रहे. विमेन का तो थर्ड होता है, मतलब विमेन ट्रैफिकिंग इज द लाइक थर्ड सबसे इकोनॉमिक जो अच्छा पूरा वर्ल्ड में यूज होता है इकोनॉमी के लिए. सो आई थिंक कि पहले वी नीड टू एड्रेस दीज इश्यूज. अच्छा अर्चना, do we have slavery or do we need that word, change word slavery से कुछ और हम बोल सकते हैं? क्या हमारे इंडिया में slavery है? Whether you are not Eurocentric, do you use word slavery? Sir, I will use word slavery because this is slavery and the thing is क्योंकि slavery का definition कभी change नहीं हुआ. It has always been the same, exploitation of people. Subjugation. Subjugation and exploitation of people. Okay, we don't have much time because I have three more editors and three more guests here. So give me last. You have fascinating. You wrote about the if we legalize prostitution, then the number of women victims to slavery will significantly reduce. What do you mean by this? There is a controversy. So. At the young age, at the age of 18, 19, you are studying all these things. All these things is an important thing. Okay, so what do you mean by this? There is a controversy that if we legalize prostitution, then the number of women victims to slavery will significantly reduce. What are your thoughts on this? Yes, sir. My thoughts particularly are like we should legalize
prostitution, but not the like purchase of prostitution. Like student का example मैं दूंगी यहाँ पे. In student, what they have did is like they have legalized the sale of prostitution and not the purchase. Purchase को illegal किया है. And इसी को मतलब ये जो law student में pass हुआ है, इसके contradictory में जर्मनी और जर्मनी एंड एक जगह like I forgot the name, sorry, but जर्मनी में basically कि they have like legalized the brothels also, ताकि उसको ना थोड़ा और maintain रख सके, and they like keep an eye on the brothels. So दो तरह से ideas Yes, yes, Archana, कि Archana, आगे great, क्या great. होगा ये But I think you need to study more when you advise we legalize prostitution, because you are taking examples from countries where 7 crores, 8 crore population. We are having one reaching towards the 150 crore population. So think about it. Yes, maybe you think. With some ideas, and this is a social science startup. Do something, because as a political science, Hindi and history, Sanskrit, we need some social science startup. So all the best, Archana, and really keep it on. I'm really very happy to look you and too confident. So over to you, Miss Priyanka. Miss Priyanka, you Yes, have sir. taken a very controversial and very hard topic per se. इस पे उतना मेरी भी पकड़ नहीं है. So सबसे पहले तो आप पीआईएल के बारे में थोड़ा बताइए कि एज Yes, sir. ए छोटे से बच्चे, छोटे से नहीं, एज ए ग्रोइंग किड, क्योंकि आप लोग छोटे बोलने से तुरंत पेरेंट को बोलते हैं कि नहीं अब छोटे नहीं है हम. तो आपका क्या व्यू है? बिकॉज पीआईएल, एवरीबडी इज अबाउट पीआईएल, बट स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज. So as a student of BA program second year, what is your view about PIL? Okay, sir. So what basically PIL is, what it does, it protect the basic human rights of the weak and disadvantaged people. So people who are left out because of poverty, because of economic or social disability. So not only the people, a person who has been suffered reference to through its human rights can file a PIL, but other members also can file PIL. So that is Other what it members, is. and it is costly. मतलब इसमें कुछ पैसे भी लगते No, हैं? sir, no, sir, no, sir. You can reach out to Supreme Court, but it will take time, sir. It's time consuming. 6 petitions you have to file in Supreme Court and 4 petition in High Court. और हिंदी में भी है? Yes, sir, of हिंदी course, sir. में? अच्छा, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बाकी लैंग्वेज में भी हम पीआईएल को डाल सकते हैं? Yes, sir. आप अपने स्टेट लेवल के कोर्ट पे किसी भी जाके लैंग्वेज में, कर यस. अच्छा, लेकिन फिर भी दिल्ली में 3 जेल्स हैं, मतलब एक मंडोली, एक रोहिणी और दूसरा तिहाड़, जो सब आप जानते होंगे. ठीक है, लेकिन वहाँ पे पीआईएल है, वहाँ पे जगह है करीब करीब मुझे लगता है कि 3 or 4,000 लोगों की, और वहाँ पे 20,000 लोग रह रहे हैं. तो क्या पीआईएल से उनको भी फायदा हो सकता है क्या? Yes, क्या sir. Yes, ऐसा sir. क्यों है कि अच्छा, उनको भी Definitely, फायदा sir. हो सकता है? Of course, sir. अब अगर अच्छा, कोई PIL उनके बेसिक राइट्स के लिए फाइल करता है तो सर, बिकॉज क्योंकि दे आर क्योंकि इन द अभी जेल, दे जस्ट वोंट मैंने, बी एबल टू. हाँ, अच्छा, कोविड में आपने कुछ पढ़ा था पीआईएल के बारे में कि कोविड के समय ढेर सारे लोग जेल में हैं, या फंडामेंटल. अच्छा, आप चलिए छोड़िए, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया आपके लिए, जो बर्डिंग स्कॉलर. आप बताइए कि आप 18 इयर्स में किस चीज पे पीआईएल डालना चाहते हैं? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द पीआईएल? अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप एक चीज पे पीआईएल डालिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि टीचर्स यस क्लास सर. नहीं लेते हैं, हम क्लास नहीं करते, हम क्लास नहीं करते हैं, यस दोनों सर. चीज. तो आप किस पे, आप एक चीज पे आप पीआईएल डाल सकते हैं? सर बेसिकली हमने अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, बट हमने नहीं देखा कितनी स्ट्रीट लाइट्स पे छोटे छोटे बच्चे वही देश का तिरंगा बेचते हुए दिख रहे थे सर. तो बेसिकली उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं सर. तो मैं तो PIL इसी पे फाइल करूंगी सर. वो भी छोटे बच्चे हैं, उनका भी बेसिक ह्यूमन राइट है टू study like us, to have a livelihood like us, and not to save Very those good. tirangas of Yes, our I country. impressed. Yesterday night I was watching a movie, in a Telugu movie, where वो दिखा रहा था कि कैसे रेनी सीजन में स्ट्रीट जो होमलेस लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं जो स्ट्रीट पे रहते हैं, उनका लाइफ कैसे हैम्पर होता है. वेरी गुड प्रियंका, कीप इट अप. Yes, और thank you so much. anything you want to say more?
नो सर, व्हाट आई वांट टू से कि ये बहुत अच्छा लीगल टूल है, बट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, सो यू शुड रियली गो थ्रू माय आर्टिकल टू नो Yes, मोर good. अबाउट And लीगल. but yes, yeah, know more about. And you also suggestion from the from my side that that you also work on it. When writing is not, क्या गांधी ने बोला था या और लोग क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला था, accept it, feel it, then you'll do it. Okay, Definitely. thank you, Priyanka. Okay, thank you so Over much, to sir. you. Yes, and well done. And I'm really proud of to what you people are doing. So over to you, Miss दीपा तिवारी. So दीपा, आपने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है और उसमें बात वही की गई है, महिला मतलब जो संशोधन जो है उसमें क्योंकि डे फर्स्ट से मुझे याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड हो रही थी वुमेन रिजर्वेशन की, और उस डिमांड को किसी एक वुमेन ने ही बोला कि मुझे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए. डू यू अग्री विथ मी दीपा? सो Yes, sir. गिव मी सम आइडिया, हाँ, कि ये कैसे आपकी अगर मान लीजिए हमने 50% रिजर्वेशन आपको मिल भी गया जो काफी दिनों से पेंडिंग है, कुछ स्टेट्स में मिलता है, तो उससे आपकी कंडीशन को कैसे सुधार मिलेगा? अच्छा दीपा तिवारी, देश की Yes. बात छोड़िए. यस सर, जैसे आपने कहा कि एक वुमेन ने ही इसको मना कराया था कि हाँ हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमारे तो रिजर्वेशन की हमें नीड ही नहीं है. लेकिन अगर हम बात वेरी करें कि गुड. हमारे बैलेंस की बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, मैंने अपने आर्टिकल में भी जो कि इंक्लूड किया है, तो हम काफी ज्यादा पीछे हैं इस चीज में. आज भी हम 20,000 मतलब 22% अगर महिलाओं को देखें, उन्हें नाम लिखना भी नहीं आता और ना ही पढ़ना आता है. और अगर देश की आधी आबादी और 30% जो महिलाएं हैं वो घर में है, हाउस वर्क करती हैं, वो कोई वर्क लेबर वर्क में उनका कोई भी योगदान नहीं है. अगर देश की आधी आबादी घर में बैठ के अपना वेस्ट करेगी, तो हम कैसे अपने देश को सुपर पावर की मतलब एक वो बना सकते हैं, सुपर पावर की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना. तो इसलिए अगर हमें अपनी सोसाइटी को बैलेंस करना है, अगर हम दोनों को जेंडर को अगर हमें बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा. हमको रिजर्वेशन दिया ही रिजर्वेशन इसलिए देना जाता है ताकि पड़ेगा, बैलेंस हाँ. हो सके. लेकिन आपको नहीं लगता है कि रिजर्वेशन देने से महिलाओं को हम मतलब एक अलग पैटर्न की तरफ जा रहे हैं? आपने पहली बात बोली वो सही बोली कि हमें हक चाहिए, रिजर्वेशन नहीं. तो इससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेट्रो में स्पेशल बॉगी होने से क्या सुरक्षा मिल गई महिलाओं को? नो सर, नॉट. नहीं, नहीं मिली. तो रिजर्वेशन, चलिए ट्रिकी क्वेश्चन है और यू इवॉल्व योरसेल्फ. ओके, सर तो आप रिजर्वेशन ना, ये अगर सर एक और मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर रिजर्वेशन नहीं करते नहीं ठीक है, बेकार है वो चीज, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम हमें एक सम्मेलन करना चाहिए. जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने एक सर्वे किया था, मतलब कि जॉब रिपोर्टर्स ने, उन्होंने जाके महिला को अवेयर किया था, इन्फॉर्म किया था कि हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो उन्होंने नेक्स्ट उनका रिजल्ट क्या आता है कि महिला का लेबर फोर्स है ना, वो उसमें जाके बहुत ज्यादा होता है. मतलब हम एक काम में सम्मेलन करना चाहिए, महिला वेरी को गुड. अवेयर शिक्षा करना चाहिए, नहीं, मैगजीन के थ्रू हमें ये करना यस दीपक, करना चाहिए नहीं, क्यों नहीं किया करना आपने होगा. 3 सालों में? करना होगा. दिस इज माय एंड आई नो यू वेरी वेल, सो आप जरूर करेंगी. और क्योंकि एक सबसे मुझे बुरी बात लगती है आज भी, फर्स्ट वुमेन जज बनी, फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन चैंपियन बनी, स्टिल वी आर लैंग्वेजिंग इन द फर्स्ट. आपका क्या मानना है इसमें? अभी भी हम सानिया मिर्जा फर्स्ट, सर ये दिस फर्स्ट, दैट फर्स्ट, इससे कैसे हम उभरेंगे? सर ये इसलिए बताया जाता है ताकि इनको देखकर महिला और इंस्पायर हो, और वो भी आगे बढ़े. इनको देखकर बोला इसलिए जाता है कि फर्स्ट महिला फर्स्ट ये, लेकिन क्योंकि आज भी महिलाओं की अच्छा, स्थिति कहीं ना कहीं पीछे है ना, इसलिए डेटास के अकॉर्डिंग तो वो भी पीछे है, जैसे कि मैंने पहले बताया, चलिए और आपका एक सुरक्षा के रियल मामले में भी. आपका रियल सोल्यूशन. सर कॉन्स्टिट्यूशन तो रियल आपने लिखा, सॉल्यूशन बहुत बढ़िया रिजर्वेशन आर्टिकल नहीं लिखा है, है रियल कि सॉल्यूशन मेरे रिजर्वेशन नहीं है. मुझे चाहिए कि अगर राजनीति में हम महिलाओं की हिस्सेदारी रखें, तो हमें हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अपने अंदर एक टिकट का वो कर देना चाहिए, 10% मेरे में महिलाएं होंगी. हर पॉलिटिकल पार्टी को ये शुरुआत करनी चाहिए. चलिए आपने पॉलिटिक्स की बात की,
तो अभी तो 40% रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल पार्टी यूपी में दे रही है, तो डू यू थिंक उस 40% रिजर्वेशन से ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और 40% रिजर्वेशन से क्या सिचुएशन सुधर जाएगा यूपी में? सर सुधर जाएगा, लेकिन सर कम से आप कम क्या प्रयास सोचते तो हैं? हो रहे हैं आप ना जी सर, प्रयास तो हो रहे हैं। अच्छा, कम से कम प्रयास यस हो रहा सर। है. So from your side, you यस want सर। 33% reservation for the women. Thank you very much, Deepa. A little bit, these are the complex questions. Still, nobody has answer, whether it's the Congress government, BJP government, AAP government, but at least you have some firm idea. Thank you very much. Over to you, थैंक यू सर। Divya. We have very less time. So, Divya, you also written a very tricky topic on citizenship, and it's a very controversial topic, and everybody knows your caliber. So, my two questions for you. One is theoretical and one is practical. India has always believed a firm about the Vasundhaiva Kutumbakam. So now denying citizenship to people, what do you think about this? Okay, sir. Thank you so अगर much. 30-40 लाख अगर 30-40 लाख लोग आ ही जाएंगे इंडिया में, या 1 करोड़ लोग आ ही जाएंगे, इट्स योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द थर्ड ईयर स्टूडेंट, व्हाट इज पॉइंट? Yes. मैंने सुना है पॉलिटिशियंस का, खुद मेरा भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन एज ए एडिटर, अगर मान लीजिए 50 लाख लोग आ ही जाते हैं इंडिया में, और कास्ट कम्युनिटी की छोड़ दीजिए, बिकॉज yesterday I have presented a paper, इंटरनल माइग्रेशन बहुत है इंडिया में, अफ्रीका में, एवरीवेयर. तो मान लीजिए 50 लाख आ ही जाते हैं लोग, तो क्या प्रॉब्लम होगी? Definitely, sir. So, sir, Vasudeva Kutumbakam, which basically means that world is a family, right? लेकिन उस फैमिली को बनाने के लिए हमारे को फैमिली में हमें हर किसी को इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे. हमें जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, द पीपल हु आर फेसिंग परसिक्यूशन इन द नेबरिंग कंट्रीज, उन्हें हमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट नोबडी एल्स विल. एंड वी एज इंडिया, क्योंकि इंडिया की वैल्यूज क्या होती है, इंडिया की वैल्यूज है दैट वी ऑलवेज फॉलो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी ऑलवेज फॉलो वननेस, एंड ये एक इंडिया की वैल्यू है. वो सिटीजन्स ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें कहाँ भेजेंगे? दूसरी कंट्री नॉट ये गोइंग. जो रह रहे हैं उनको कहाँ भेजेंगे? चलिए, आपका सोल्यूशन है, तो आप अग्री करते हैं अबाउट दिस ऑल पॉलिटिकल डिबेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमें अगर कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको कैंप्स में नहीं भेजना चाहिए, रिफ्यूजी कैंप्स में, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस हमारे पास लैंड है, नॉट इंडिया के पास नहीं, हर एक अफ्रीकन यूरोपियन कंट्री के पास लैंड है अभी, जहाँ पे हम रिफ्यूजीज को रख सके. वेरी गुड insight. So, what is your view about that CAA and NRC? Because जब सिटीजनशिप की बात आएगी, और अगर हम लोग CAA NRC के बारे में बात नहीं करें, एज ए यंग स्टूडेंट, what you are finding? Because government courts तो जो बोलती है, एज ए editor of continuity and change, what are your thinking about the CAA and NRC? Okay, sir. So, sir, first of all, when it comes to CA and NRC, मैं इसमें दो चीजें बहुत important बोलना चाहूंगी कि we need to understand what it means. जो हमारे कंट्री में हमने जो इसके consequence देखे हैं ये एक्ट आने के, they were purely based on ignorance of the information, ignorance of the actual facts of the act, and that ignorance was actually the consequence or the result of less information provided by the government itself. तो ये एक And more information by social media, and more information by Exactly, social like media. Abna said, Thank you, बहुत Divya. ज़्यादा information. Thank you very much. We are running out of time. Thank you, Divya, and all the best for your law career. Can make it and law as a very fascinating career for our young students. Not only think about the professorship, IAS, IPS, and young girls, you need a profession like law. Become judge. Lawyers, and we need lawyers and judges in the highest posts. Thank you very much, Divya. So we are having 3 more writers. One is always I'm very privileged to speak to Vishesh Kasmi. Mr. Kasmi, and you are the part of good initiative by Department of History, Mr. Kasmi. So, what do you think about, you have written about the मध्य एशिया, आपने मध्य एशिया के बारे में लिखा है, और जो कि हम भूल ही गए थे मध्य एशिया को.
आई थिंक 1991 से या 1992 में जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, और उसके बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जो भी जितने 15 कंट्रीज बने, तो हम मध्य एशिया को भूल गए, हमारा कंसंट्रेशन चाइना में रहा। तो वो आपको क्या कंपेल किया कि आप मध्य एशिया के बारे में देखें? हेलो सर, थैंक यू सर हाँ, फॉर यस गिविंग यस मी अ यस, आपकी चांस। आवाज आ रही है। अरे चांस नहीं, टेकिंग टेकिंग चांस, बिकॉज आपने लिखा है तो आप लिखो तो चांस मिलेगा, डेफिनेटली बोलो तो लोग सुनेंगे। हाँ, यस गो अहेड। थैंक यू सर। सर एक जो मतलब हम लोग मध्य एशिया को देख रहे थे, तो 2012 से इसकी मतलब इसमें काफी ज्यादा इसका जो इनिशिएटिव एक तरीके से हुआ उज्बेकिस्तान में, जो हमारे एमओएस गए थे, तो वहां से शुरुआत होता है। लेकिन अभी इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो हमारा कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस था कि कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस के लिए हमें उज्बेकिस्तान को लेना है, उनसे गैस देना है और पेट्रोलियम वगैरह। लेकिन अभी जो है अफगानिस्तान के बाद एक सिक्योरिटी की जो कंसर्न है वो भी उभर के आया है, और जैसे ही अफगानिस्तान का टेक ओवर हुआ है उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इस रीजन में काफी ज्यादा, यूरेशिया के रीजन में काफी ज्यादा चहल हलचल दिखने लगी है। चाइना, रशिया और जो इंडिया है उसकी भी, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये 2019 से 3 मीटिंग्स हुई है, 2019 20 में, यानी कि हम लोगों ने कोविड में भी वर्चुअली किया है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए काफी बढ़ गया। तो मुझे लगा कि मुझे इसे बताना चाहिए, तो इसलिए सर मैंने लिखा। वेरी गुड विशेष। एक एक बताइए कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को। यस सर। सर पहले तो मतलब मैंने जो है इसमें एक ये है कि मैंने एक संयुक्त रूप से जो भी जितने भी एक्सपर्टीज हैं बहुत सारे, इंडिया के बाहर भी अंदर भी, तो उनकी एक एक जो व्यू है उसको सम्मिलित रूप से रखा है, तो मैंने उसका सोर्स भी इसमें बताया है। तो सबसे पहले तो यही है कि हम लोग एक कि हम लोग जैसे कि हमने जो इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्वाड बनाया, तो एक आइडिया ये है कि इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही जो है एक दबाव बना सकते हैं वेरी गुड, चाइना। वेरी गुड। और आप, मैं क्विजिंग नहीं करूंगा, आप इन सारे के कैपिटल और इन सब को, इनके लोकेशंस को आई थिंक अच्छे से समझ चुके होंगे इन कंट्रीज के, एंड दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट फॉर आवर इंडिया। और हम चाइना चाइना कर छोड़ें और हम कुछ और जगह पे जो हमारा रियल पार्टनर्स हैं उनकी तरफ देखें। आई थिंक, थैंक यू विशेष, अ वंडरफुल जर्नी। एक और मिस वैष्णवी मिश्रा, उसने भी काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे लिखा है। और वैष्णवी, आर यू हियर? वैष्णवी मिश्रा? Sir, she is not here, I think. Okay. Okay. So your input, okay. Astha. Asha, yes, Astha. Yes, Miss Astha, are you here? Sir, good afternoon. Yes, Astha. So आपने again you people are written about the Arms Act. So Yes, sir. आपको कैसे ये प्रोपेल किया, कैसे मतलब आपने अपने को एनर्जाइज किया कि इतने बड़े इशू को लिखने के लिए? बस यही क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए। Sir, actually, recently we all heard about the incident in Nagaland. Recently in Yes. Nagaland, 14 civilians were killed in a Boers military forces. Sir, so मुझे यही से लगा कि मुझे इस पे लिखना चाहिए. अच्छा, तो मतलब ये कि आपको सेना से प्यार नहीं है? नो सर, ऐसा नहीं है, बट सर एज अ ह्यूमन हमारा जब बेसिक राइट से वायलेट होगा तो उसके लिए ये सेना जो सेना का बेसिक राइट क्या है? आर्मी का, उसका भी तो बेसिक राइट हो सकता है। अगर हो सके कि ये किलिंग, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हो सके कि ये किलिंग अपने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए की गई हो सकता है। नो, इट्स आस्था बहुत अच्छा टॉपिक है। आई एम जस्ट आई एम कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। वेरी गुड टॉपिक, यू रिटन वंडरफुल आर्टिकल ऑन आर्म्स एक्ट। बस आपको ये करना चाहिए कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उनको कट मत कीजिए अपने से, उनके बारे में जानिए और उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, डोंट कॉल देम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कॉल देम मेघालय, मणिपुर, नेम देम,
बड़ी पॉइंट, हर एक को नाम सबसे अच्छा लगता है, नॉर्थ ईस्ट कह के हम उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो हम काइंडली डोंट say them only northeast country, because the people, because you know, in our college more than 150 students are from northeast, and as a co-convener of northeast cell I know their ideas. What do you point? तो Yes, एक sir. चीज हम लोग यहाँ पे देंगे, चूंकि आपने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट को हम लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, उनके स्टेट के नाम से बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच आपका। Exactly, sir. एंड द लास्ट वन ऑफ द intelligent student of BA honors third year political science, and he's also running an editor of a Pariniti journal of Department of Political Science, and he is capable, but his continuous writing in this magazine also, and I think 7 सीरीज में उसने 3 आर्टिकल लिखा है। सो हैट्स ऑफ मिस्टर साहिद अहमद एंड मिस्टर काजल। एंड साहिद के बारे में जानता हूँ, वो शुरू से काफी इंटरेस्टेड रहा है, मौका काफी बाद में मिला। ही वॉज ए स्ट्रॉन्च रीडर and writer and speaker also. So Sahid, what propelled you to write these kind of article with Miss Kajal? Over to you, Sahid. So, first of all, a very warm good afternoon to everybody, Honorable Chief Guest of the evening, respected teachers, and all my dear friends. Basically, I wrote article on women just because of the place I belong to. Is a very small place where women face a lot of problems in their daily lives. There are social problems, there are family problems, there is a kind of domestic violence which I see at my native place. So that is something which propelled me to write on this topic. And I usually read articles of women. So that is why I wrote this article. Okay, very good. Your concern, you have written one concern, Global Gender Gap Report 2021, released by World Economic Forum, and I think 140. हमारा जो rank है, Mr. Said, our rank is 140 out of 156. Independence के इतने बाद भी, आपका क्या aim है? मतलब it's not theoretical, it's practically. Because you people give us some practical solution. Politicians theoretical देते हैं, teachers भी कभी कभी theorize कर देते हैं, but a budding scholar, what do you think about how we progress? क्योंकि बात तो करते रहेंगे, डेटा हम देते रहेंगे, लेकिन you are coming from a small, not a small town, झारखंड, और इस कोई is a very famous before and after Mr. धोनी, जयपाल Nepal से होता है। साहब थे, हाँ, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी आवाज उठाई थी। सो छोटा नहीं है, लेकिन चलिए, आपने बोला छोटा, इट्स मोडेस्टी। सो आप क्या करेंगे द पोजीशन ऑफ वुमेन स्ट्रांग एंड स्ट्रॉन्च नेशन के लिए? साहिब। Sir, first of all, I would like to highlight the LPG reform, which at that point of time was opined that कि ये LPG reform जो है ये women को workforce में ज़्यादा से ज़्यादा involve करेगा। बट एक मिंट की रिपोर्ट आई थी सर कुछ दिन पहले, जिसमें उसने बताया है कि दिस एलपीजी रिफॉर्म हैज नॉट एलिमिनेटेड दिस जेंडर इम्बैलेंस। इन फैक्ट देयर इज अ जेंडर सेगमेंटेशन दैट हैज इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें फिर मैं कुछ डाटा दूंगा सर कि industries that are associated with manufacturing, their women participation is almost 30 to 40%, and industries that are associated with education, research, transport, and engineering, their women participation is merely as low as 2 to 5%. तो ये तो इंक्रीज वेरी हुआ। No, गुड। there is, अब हम इसको इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला तो इसको दो तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। पहला हम कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज योर थीम इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाई आई एम एसोसिएटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, कि इसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करें, जैसे आर्टिकल 21A है, वो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी चिल्ड्रन हैज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज और हर एज। लेकिन गांव में ऐसा होता है सर। Okay, Sahid. Ab we are running out of time really. So kindly go and read it out. His article. A woman is by definition strong and strong. Miss Kajal and Miss Said. Kajal भी यहाँ पे है क्या? अच्छा, नो सर, शाहिद, आपने आपने यहाँ पे बस फॉर ए लास्ट क्वेश्चन, और सबके लिए ओवर टू यू। उसके बाद मैं हमारे एंकर अनंत को आपने यहाँ पे क्या ये
आजकल का पॉलिटिकल सीन को देखते हुए आपने यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस काली, गॉडेस लक्ष्मी, ओ माय गॉड. सो व्हेन यू राइटिंग, व्हाट इज योर आइडिया टू ये सारी बातों को, क्योंकि काजल भी लिख रही थी इसके कारण आपने दिया, व्हाट instigate you to write all these names? What a सर funnier side. Yeah, Sahid. सर एक चीज है कि मोस्ट ऑफ अस आर बाउंड बाय आवर रिलीजन. तो अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रिलीजन में वुमेन को हमेशा आगे रखा गया है. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से भी देखें और उसे भी आज हम इम्प्लाई करें, अगर हम मनुस्मृति को छोड़ दें और पुराणास को छोड़ दें, वेदास को पढ़े और इन सारी मिथोलॉजी को पढ़े, तो इसमें भी वुमेन को आगे रखा गया है. तो दैट वाज चलिए, समथिंग. तो ओके, थैंक यू शाहिद. लेकिन यहाँ पे मैरी भी होनी चाहिए और बाकी चीजें भी होनी चाहिए थी. थैंक यू वेरी मच, मिस्टर अंतोषी. Thank you, sir. I would like to request Dr. Amna Mirza to give some valuable remarks on today's event, and please give us some of your valuable insights on that. Please. Thank you so much, Anand. I'll be brief as I have to rush for a class. At the very outset, congratulations to And the entire. Dr. Amna, sorry for I'm taking a No, little no, bit no. more time. We are Sorry all for this. teachers. Sorry, We all. sorry, sorry. So, at the very outset, congratulations to the entire JCC team, Archana, Divya, Priyanka, Deepa, all the contributors, Vaishnavi, Shahid, Kajal, Vishesh, all the wonderful people. Your ideas, they are gateways for progress. Your innovative thoughts and writings, they are harbingers of new things to come forward. So kudos to you. Keep it up there. Just two of my suggestions, because you guys are working on digital platform, and as I said it right at the beginning कि आज का जो युवा है वो एक जॉब क्रिएटर है, आज का जो युवा है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइवर है. सो मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कार्यक्रम के बाद मैं भी अपने फेसबुक पेज पर व अन्य प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के बारे में लिखूंगी. मेक बेस्ट यूज to disseminate the information as much as possible. Then again, another important suggestion, if we can also, because yesterday when me and Dr. Manish were talking, because CEC पे मैं काफी lectures करती हूँ, और हम teachers, we are in the digital age. Do employ YouTube also. For example, when Dr. Manish was interacting with Archana, Divya, Priyanka, Deepa, I think this conversation, very important conversation, should be out there on important both audio as well as visual format to get the best. So once again, the entire JCC team, खूब अच्छा काम करिए. Keep doing great work. It was good to see all your spirit for learning, for creative imaginations, for reflections, and giving space to new writers. आप सब लोग खूब अच्छा काम करते रहिए. मैं SPM कॉलेज में पढ़ाती हूँ. If I can be of any help with issues concerning global governance, globalization 4.0, from YouTube lectures to my writings in various newspapers or at my workplace, always there. किसी भी तरह के हमारे प्रति, हमारी तरफ से सहयोग की बात हो तो हमें जरूर बताइए. खूब अच्छा काम करिए. Once again, thank you Dr. Manish for inviting us. It was indeed great. And Archana and everyone, मुझे भी like was seeing के feedback form, मुझे भी अपना e certificate चाहिए होगा. But thank you so much. खूब अच्छा काम करिए.